This is a 3 days compilation video. Let's start with the analysis. सबसे पहला टॉपिक है आपका इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड यूएस हैव मूव्ड टुवर्ड्स द इंटरिम अग्रीमेंट ऑन द रेसिप्रोकल ट्रेड मिनी ट्रेड डील के रूप में. दे हैव मूव टुवर्ड्स दिस. की इश्यूज क्या है? ज़ीरो टैरिफ ऑन टेक्सटाइल्स. Commerce Minister Piyush Goyal has noted that India will receive concessions on textile exports similar to those recently granted to Bangladesh. Strategic autonomy की अगर बात की जाए तो articles debate whether India's autonomy is being tested by US pressure regarding the Russian oil and Venezuela trade, and the reciprocity shift. There is a notable shift from the multilateralism WTO led to bilateral transaction relationships. Example, America First versus the Viksit Bharat 2047. यूपीएससी रेलेवेंस में बायलेटरल एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म आ जाता है, एंड द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. दूसरा है इंडिया रशिया रिलेशंस ऑयल इंपोर्ट्स के बेसिस पे. तो स्टेटस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज डिक्लाइन टू यूएस क्लेम्स दैट इंडिया हैज रिड्यूस द रशियन ऑयल इंपोर्ट्स as wanted by the Washington strategic norms. While India seeks to diversify energy resources, it emphasizes that its pronouncement is guided by the price stability and national energy security. So relevance यहाँ पर energy security आ जाता है, impact of the Western sanctions on Indian foreign policy. नेक्स्ट टॉपिक आपका जुडिशल डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर है. स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की अगर हम बात करें तो कंसर्न्स रेज हुए हैं अबाउट द SIR प्रोसेस इन द इलेक्टोरल रोल्स, स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल, एंड द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर, द जस्टिस गवाई रिमार्क्ड that simultaneous polls, one nation, one election, do not inherently violate the basic structure of the constitution provided constitutional procedures are followed. National anthem versus the song, legal debates surround the mandatory singing of Vande Mataram versus the Janagana Mana, highlighting the friction between the religious freedom, that is Article 25, and civic duties also. Next topic is related to general studies, paper 3, economy, environment and security. 16 फाइनेंस कमीशन एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन के ऊपर है. अब ये आपका पॉलिटी में भी आ जाता है. फाइनेंस कमीशन एक चैप्टर है, उसमें वर्टिकल डिवोल्यूशन एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से. कोर इशू की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अबाउट द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, etc. They have questioned the current horizontal distribution formula. Debate क्या है? Whether the 16th Finance Commission should maintain 41% vertical devolution to states or increase it, and how to balance the performance tax efforts with the equity income gap, etc. अब यूपीएससी रेलेवेंस में आपका फिजिकल फेडरलिज्म आ जाता है, आर्टिकल 280, एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. लेबर कोड्स की अगर मैं बात करूँ एंड एम्पावरमेंट बेसिस पे तो कंसोलिडेशन, 29 central labor laws have been merged into 4 codes: wages, social security, industrial relations and occupational safety. Benefits की अगर मैं बात करूँ, fixed term employment, universalization of minimum wages and extending social security to gig platform workers. UPSC relevance, inclusive growth, labor reforms and formalization of the economy. Infrastructure and environment, coastal road, musical path. Mumbai's coastal road has implemented rumble strips that play the tune of Jai Ho at the designated speed of 60 to 80 km per hour using the Hungarian technology. Dal Lake restoration. Jammu and Kashmir has shelved a specific rupees 416.72 crore restoration plan, raising the concerns about the ecological degradation of the lake due to untreated sewage and encroachment. अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका यूपीएससी रिलेवेंस, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इको टूरिज्म. नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के ऊपर फॉर द बुक्स.
New framework, the Defense Ministry is framing guidelines for both serving and retired personnel regarding the publication of the manuscripts. Other topic is with respect to ethics versus the security. This addresses the tensions between the individual rights to expression or academic contribution and the Official Secrets Act OSA regarding the sensitive operational data. Now, these are the prelim specific quick facts. You may have a look at it. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस के ऊपर है. इंडिया चाइना बॉर्डर, द पंचशील मिस इंटरप्रिटेशन. कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, द चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल अनिल चौहान has stated that India historically believed the 1954 Panchsheel Agreement, 5 principles of the peaceful coexistence, that had effectively settled the northern border. Key revelation: while India viewed the identification of 6 trade passes as reinforcement of the border's legitimacy, the Chinese position was that the pact was strictly for the trade and pilgrimage and did not reflect their stance on the border. So, strategic shift क्या है? CDS noted that the Himalayan buffer, that is the Tibet, evaporated in 1954, leading to a direct border. UPSC relevance: evolution of India-China relations, the historical context of 1962 conflict, and the importance of integrated forward-looking strategic planning. Bhism think tank. India-Bangladesh relations post 2024 uprising. कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडरशिप फॉलोइंग अ landslide victory has indicated that national interest will guide the renewal of 1996 Ganga Water Treaty due for renewal in December 2026. Key concerns की अगर हम बात करें, the BNP urges India to move past the Awami League era. So यहाँ पर neighborhood first policy, transboundary water sharing and the impact for domestic politics on bilateral diplomacy, ये important है. Regulation of AI generated content, the Ministry of Electronics and IT MeitY has announced the IT rules to mandate the labeling of AI generated or synthetic content, deepfakes. New rules क्या है? Intermediaries must provide a user declaration for AI content. Take down timelines for sensitive content reduced from 72 hours to 36 hours. Mandatory reporting of the inauthentic synthetic content within 12 to 36 hours. UPSC relevance की अगर मैं बात करूँ तो digital sovereignty, ethics in AI and the role of state in regulating disruptive technologies. नेक्स्ट आपका टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है, इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड साइंस. इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यू अर्बन चैलेंज फंड के ऊपर है. स्कीम क्या है? अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद एन outlay of around 1 lakh crore rupees from the center has aimed at a total investment of rupees 4 lakh crore. स्ट्रक्चर क्या है? सेंटर जो है वो 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अपना कवर करेगा and cities must raise at least 50% from the market, bonds or loans. Target cities with 10 lakh plus population and the state capitals. Objective क्या है? Shift from grant based financing to market linked reform driven infrastructure creation. Urbanization challenges, municipal financing and public private partnership. Energy economics, the frozen oil prices benefit. Issue क्या है? Despite a 41.5% decline in the global crude oil prices since June 2022, Indian petrol prices have been cut only by 1.9%. The convenience mechanism, what is it? That oil marketing companies pass on price spikes quickly but freeze the prices during declines to recover the past losses or bolster margins. Inflation management, deregulation of the fuel prices and the role of the OMCs in the regulated market. Climate change and water security. एक नई स्टडी रिवील हुई है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गंगा का जो पानी है दैट हैज़ डिक्लाइन बाय अराउंड 17% ड्यू टू इंटेंसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग एंड डिक्लाइन इन रेनफॉल. लेकिन इंडस जो रिवर वाटर है वो उसमें इंक्रीमेंट देखा गया है. सो देयर इज़ अ म्यूच
on security conference. Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized the polluter pays and called for a differentiated treatment for countries with the lower historic emission. Next, आपका this is based on Numaligarh bioethanol plant, India's first commercial scale 2G bioethanol plant using bamboo as the feedstock, which is operational in Assam, aiming to blend ethanol while ensuring the bamboo grow sustainability. So this is the last topic of the day. This is about the Chiral valve. डिस्कवरी हुई है जहाँ पर एक जॉइंट टीम थी IIT दिल्ली एंड जर्मनी की, जिन्होंने डेवलप किया है डिवाइस टू सॉर्ट द इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड ऑन देयर हेडेडनेस चिरालिटी विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड. एप्लीकेशन कहाँ होगा? दिस कुड लीड टू अल्ट्रा लो पावर स्पिंट्रॉनिक electronics which are more efficient than the current charge based electronics. This is not that important. ये important है, इसको आप देख लीजिएगा. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.